Hello everyone, I am Nidhi Rai. I am a nutrition and fitness coach. As a nutrition coach, मैंने बहुत बार मेडिटेरेनियन डाइट अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट की है। वो क्लाइंट्स जो हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस करना चाहते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट कोई स्टारवेशन या फैट डाइट नहीं है। ये न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंज पे फोकस करती है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। दो वेट लॉस कम्स साइमल्टेनियसली along with other health benefit. Mediterranean diet is a must-try diet. It has been ranked as number one diet in the world since last 5 years in a row by health experts around the world. इसके tremendous health benefits हैं। ये बहुत ही nutrition rich diet है। It emphasizes on whole plant-based food, whole natural food, high fiber food, and it restricts refined and processed one. This diet encourages fruits, vegetables, nuts, seeds, lentils, legumes, whole grains, lean protein, and good fats like olive oil. All these are nutrient dense and rich in vitamins, minerals, antioxidant, and this diet has anti-inflammatory properties. ये diet आपको young और fresh feel कराती है. This diet includes healthy omega-3 fatty acids like fish, walnuts, flax seeds, etc. This diet has amazing health benefit. It helps to fight obesity, hypertension, cardiovascular diseases, age-related brain disorders, etc. तो पहला benefit है it keeps your heart healthy. It reduces the risk of heart attack. Because of this, it is consistently ranked as a top diet by US News and World Report, and it is the best diet overall. Second benefit, Mediterranean diet is also good for your brain. It is in fact a brain tonic. Researchers found this diet can slow cognitive decline and it prevents progressive diseases like Alzheimer's. So अगर आपको अपने brain को healthy रखना है, young रखना है, तो this diet is the best diet. Third, this diet may promote weight loss as it encourages clean eating. So it can result in a sustainable and healthy weight loss as recommended. That is half kg to 1 kg per week. ये diet किसी भी food group को omit नहीं करती. So it promotes a lifestyle change rather than any quick fix. Fourth, this diet can help to prevent or manage type 2 diabetes. This diet emphasizes on carbohydrates from vegetables and whole grains or complex carbs which don't affect your blood sugar as much as simple or refined carbs. It also includes good fats and protein. The Mediterranean diet encourages plenty of exercise. Fifth, it may prevent cancer. It is antioxidant rich diet. It is anti-inflammatory. It improves our immunity. Mediterranean diet also relieves rheumatoid arthritis, an autoimmune disorder which causes pain and swelling of our joints. So this diet is anti-inflammatory. Mediterranean diet is easy to follow. It has variety of fruit, vegetables, and does not restrict any food group. It is delicious. It is full of natural food, full of flavor, from ripe fruits to crunchy nut. Its main elements are sure to tempt our taste bud. This diet has plenty of fiber-rich vegetables and fruits which are full of fiber. It can manage your weight as well as it is good for the gut. फाइबर गिव्स अस सैटिस्फैक्शन और इससे हमारा हेल्दी वेट लॉस होता है। तो ये कोई योयो डाइट नहीं है, बट इसमें एक ही ट्रिक है दैट यू नीड टू रिप्लेस योर हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स विद फाइबरस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट फॉर बेटर रिजल्ट फॉर वेट लॉस। सो टू सम अप, पीपल हु लिव इन इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज इन द मेडिटेरेनियन रीजन हैव ईटन दिस वे फॉर सेंचुरीज। तो मेडिटेरेनियन डाइट जो है आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को लो करती है, हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करती है और काफी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप इस डाइट को कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज करते हो तो आपका हेल्दी वे में वेट लॉस भी हो सकता है और डाइट से आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है और आपकी एजिंग भी ग्रेसफुली हो सकती है। सो हेल्दी एजिंग के लिए भी ये डाइट बहुत ही इफेक्टिव है। सो ओवरऑल मेडिटेरेनियन डाइट इज अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट एज इट इंक्लूड ऑल macronutrients like carbohydrates, fats and proteins as well as micronutrients like vitamins and minerals. So it's a must try diet for good health and great results.